Hello, Karishma ma'am. Hello. So good afternoon, everybody. I welcome you all to SNJB's Ideation Challenge. And this is an initiative taken by SNJB Institute for all our students who are standard 8th and above and current students of SNJB from all the different institutes. Today, on 18th, we have organized first idea generation workshop, which was taken in online and offline mode. But since due to this hybrid mode, we were not able to reach much of the students. So today we have organized this idea generation workshop second purely in the online mode so that you all can have the real feel of how the ideas are generated, how they need to be pitched, how to find the problem, how to find the solution to that problem, and how to interpret yourself in front of the jury. Today, we have Mr. Gaurav Mishra, founder and CEO of Navyog Entrepreneurs, who has trained more than 3,000 students in the field of startups and has invested in different startups himself. This is for your information that at stage 1, once you fill the registration form, then you will be asked to pitch your idea, and this will be in around second week of February. This date will be again once again told to you later on for the students, those who register. Here, you will have to show the problem statement, solution that you are going to provide, and who are the different team members and who is your mentor. That mentor is the staff from your institute. You can present this in the form of card sheet. You can prepare the card sheet size poster or flex, or you can prepare the PowerPoint presentation yourself. Now, once the today's session starts, I will share attendance link on the Zoom as well as YouTube. So those who are watching from YouTube, they also have to fill that attendance form. Those who are on the Zoom, they also have to fill the attendance form. All the staff, students attending today's event have to fill that attendance form. And lastly, I will share one registration form link. So those who are ready with their ideas and solution to the some of the problem, they should feel, or those who want to participate into this ideation challenge, they should fill that registration form. The last date to fill this registration form is 8th of February. Attendance form you have to fill by today itself. Please do not confuse between the attendance form and the registration form. Registration is for your idea. Attendance is only for the details of your attending the session today. So thank you. I hand over to Mishra sir. Mishra sir, please welcome. Thank, thank you, everyone. हेलो तुम लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हो थोड़ा बेटर रहेगा. Yes sir, we can hear you. Everyone can hear me? Yeah. You can raise your hands if everyone can hear me. Please raise your hands. अपना हाथ
ऊपर कर सकते हो या रिप्लाई कर सकते हो यस, तो बेटर रहेगा या। तो ठीक है, तो आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आइडिया जनरेट मैं लीन कैनवस भी सिखाने वाला हूँ। हमारे साथ एक बहुत बड़ा फेमस यंग एंटरप्रेन्योर इंडिया का ज्वाइन करने वाला है, प्रफुल्ल बिल्लोर, एमबीए चाय वाला, अगर तुमने सुना होगा। उसका 22 लोकेशंस अक्रॉस कंट्री, यंगेस्ट करोड़ पर मतलब यंगेस्ट फंडेड कंपनी है, एमबीए ड्रॉप आउट। ही विल बी जॉइनिंग एंड शेयरिंग यू हिज आइडिया वेरी कम टाइम, तो उसने हाँ बोला आने के लिए, तो ही विल बी जॉइनिंग एट 4:45 हमें ज्वाइन करेगा। मैं हिंदी में सेशन थोड़ा ज्यादा लूंगा। तो फर्स्टली मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनना है, अभी नहीं या बाद में, कितने लोगों को बनना है? मैंने ये क्वेश्चन हमेशा स्टार्टिंग से हमेशा पूछता हूँ, कितने लोगों का बिजनेस खड़ा करना है, चालू करना है? ये टाइप कर सकते हो तुम लोग अपना चैट पे भी बात कर सकते हो, हाथ भी ऊपर कर सकते हो। तो इंटरेक्टिव बनाओ, अच्छा रहेगा। कितने लोग हैं यार? 100 लोग हैं, 99 98 पार्टिसिपेंट्स है, 97 पार्टिसिपेंट्स है। थोड़े लोग हाथ करो यार, अभी नहीं बनना है, बाद में बनना है फ्यूचर में। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखाओ। ओके, आ रहा है अभी, गुड गुड गुड। ओके, बेटर है, गुड। एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस क्यों खोलना चाहिए, कोई जानते हो? तुम लोग कुछ ये बता सकते हो क्यों खोलना चाहिए? कोई भी क्यों खोलना चाहिए, बिजनेस क्यों खोलना चाहिए, बता सकते हो? एक मिनट, हैंड्स डाउन कर दो और बताओ क्यों खोलना चाहिए। आई एम ऑल्सो एंटरप्रेन्योर। ओके, किसी ने लिखा है मुझे क्यों खोलना चाहिए। मैं म्यूट मैं उनको म्यूट कर दूंगा, सब लोग ना हैंड्स डाउन कर दो, फिर वो बेटर रहेगा। हाँ, क्यों बनना चाहिए, लेकिन टाइप ऑल्सो इन द बॉक्स, बेटर रहेगा। किसी को बिजनेस क्यों खोलना चाहिए, किस लिए खोलना चाहिए, वो बताओ जरा। लगता है अभी लोग ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, क्यों? मतलब कौन हाथ ऊपर Yes, किया Roshni. जरा? Yes, Roshni. रोशनी। I have asked you to unmute yourself, and you can answer the answer, sir. कितने लोग यहाँ पे बनना चाहते हैं जरा वो बताओ। लो, क्यों एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाओ। बिजनेस क्यों खोलने का रीजन क्या होगा, कोई तो रीजन बताओ। अरे यार, इंटरेक्टिव बनाओ, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, इतने सारे लोग हैं, थोड़ा बनाओ। यहाँ पे सिमिलर फेसेस मुझे दिख रहे हैं। क्यों क्यों बिजनेस? टू डेवलप अ सोसाइटी एंड नेशन, गुड। नेक्स्ट। और और बताओ, हैंड भी रेस कर सकते हो, या तुम लोग हैंड रेस करो, या बताओ। टू क्रिएट इनोवेटिव आइडियाज एंड अर्न मनी, वेरी गुड। नेक्स्ट। और क्यों बनना चाहते हो? जय जयवर्धन। हाँ, जयवर्धन जी बोलिए। To solve the problems in our society. वेरी गुड। शीत Sheetal has written in section. We also get one businessman and also got a job for employment. Next. Okay. तो मैं एक मिनट देखता हूँ क्या है। एक, सब लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे? ये यस बोल दो अगर स्क्रीन दिख रहा है तो। ओके, तो अभी बिफोर स्टार्टिंग अ सेशन, अभी थोड़ा लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव। मैं बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम आल्सो, सो आइडिया जनरेशन में हमेशा दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंडिंग राइट प्रॉब्लम एंड राइट सोल्यूशन। अभी तुम लोग मैं लास्ट टाइम एग्जांपल उठाया था ऑफलाइन में कि चांदवड़ में भी कोई
चारवड़ जैसी जगह पे, नासिक नासिक में वो कितने प्रॉब्लम्स है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है यार, नासिक में या कितने प्रॉब्लम्स है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नेक्स्ट, नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पोल्यूशन। नेक्स्ट, पोल्यूशन, हॉस्पिटल भी काम है ये। लास्ट टाइम आया था, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, रास्ते खराब है, ओके, दैट दैट लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल कम है। टू थिंग्स है, यश गांधी एंड अमित हैज सेड हॉस्पिटल कम है। यश, यश इतु, आई हैव unmuted you, यश इतु। ओके, तो हॉस्पिटल कम है, सब लोग लीन कैनवस दिख रहा है, राइट? लेस वाटर सप्लाई, नो इंडस्ट्री इन चांदवड़, ओके, लेस वाटर सप्लाई। तो लेट्स स्टार्ट इन एग्जांपल। यहाँ पे दो कॉमन एग्जांपल लास्ट टाइम में मिला था मुझे कि हॉस्पिटल्स कम है। डू यू ऑल अग्री अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है? तुम लोग अग्री करते हो टेक्नोलॉजी का जमाना है? यस और नो? अरे सब लोग इंटरेक्टिव बनो, तब में टेक्नोलॉजी का जमाना है, यस और नो? तो क्या सोल्यूशन कर सकते हो? हॉस्पिटल्स कम है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? तुम लोग क्या हो सकता है? क्या सोल्यूशन हो सकता है, बताओ? To become government hospitals and online treatment. Next, क्या हो सकता है? आप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा आप बताओ? ऑनलाइन ट्रीटमेंट, श्रुति ने भी बराबर लिखा, सब लोग बराबर बोल रहे हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट क्या? हॉस्पिटल रिलेटेड या व्हाट? बट not a good management to use proper manner for production and agriculture. ठीक है, क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन ट्रीटमेंट, ठीक है, ऑनलाइन ट्रीटमेंट प्रैक्टो जैसा कुछ चालू कर सकते हैं। प्रैक्टो है, या जिसे ऑनलाइन परफेक्ट प्रिकॉशंस टू डिजीजेस, माय लाइफ ऐप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, गुड। चलो एग्जांपल लेते हैं। हमने प्रॉब्लम ढूंढा कि पहला प्रॉब्लम हमने ढूंढा चांदवड़ में हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं। सोल्यूशन क्या है कि डॉक्टर्स को हम लोग ऑनलाइन लेके आ सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। एम आई राइट, यस और नो? ठीक है, तो ये सोल्यूशन है। अभी नेक्स्ट सोल्यूशन हमारा, और और क्या सोल्यूशन हम ला सकते हैं, और क्या हम लोग डॉक्टर्स का रिसर्च करेंगे, और क्या क्या ला सकते हैं? ऑनलाइन ट्रीटमेंट है, तो एस्टैब्लिश हॉस्पिटल, ऑनलाइन का जमाना है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, और क्या होता है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट अभी लेट्स स्टार्ट एन एग्जांपल। ठीक है, मुझे ये मत बताओ, ओला ओला क्यों ओला ओला उबर क्यों इंडिया में आया? व्हाई डिड ओला उबर इंडिया में, क्यों ओला उबर इंडिया में आया? कैन एनीवन टेल मी व्हाई डिड ओला उबर केम टू इंडिया? ओला उबर इंडिया में क्यों आया? हाथ रेस कर सकते हो, बता सकते हो ओला उबर क्यों इंडिया में आया? टू फास्ट ट्रांसपोर्ट, ओके, और बताओ।
ओला उबर इंडिया में कितने लोग यहाँ पे ओला यूज कर, कभी ओला यूज किया है फ्यूचर में, या कभी किसी ने पहले भी यूज किया है उबर? ओला लोगों ने यूज किया है पहले। ठीक है, व्हाई डिड फ्लिप, चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट और अमेजोन क्यों इंडिया में आया? कितने लोग यहाँ पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट यूज करते हैं? ब्रॉड होम डिलीवरी फॉर बिजनेस, क्या क्या सोल्यूशन देखा उन्होंने, क्या देखा उन्होंने, क्या इंपॉर्टेंट है? they see more profit they get, we can shop online for anything. Okay, home delivery next। तो प्रॉब्लम क्या था कि ओला ने, सॉरी अमेजोन ने देखा कि घर तक पहुंचा दी, घर 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 तक शॉपिंग। गायत्री ने सही चीज बोला, घर तक शॉपिंग। उन्होंने एक चीज देखा कि घर तक शॉपिंग होगा तो बहुत इजी रहेगा एंड टू एंड कस्टमर्स को पहुंचाने के लिए सारा सामान। तो कंपनी नीड अ कस्टमर फॉर वर्चुअल शॉपिंग। वेरी गुड सूरज। फॉर फार अवे प्रोडक्शन कैन नॉट कम फास्ट। वेरी गुड। इसलिए फ्लिपकार्ट ने क्या देखा कि पहला चीज कि दे हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम फॉर लास्ट माइल डिलीवरी, एंड ऑल्सो लास्ट में मतलब एंड तक गांव में बैठे हुए लोग को भी पहुंचा सकते हैं। प्रॉब्लम देखा और सोल्यूशन निकाला। वेरी गुड। रिड्यूस टाइम वेस्टेज। वेरी गुड। तो ये प्रॉब्लम सोल्यूशन हुआ। तो पहला प्रॉब्लम देखा कि घर घर बैठे शॉपिंग करना, लास्ट में डिलीवरी पहुंचाना। सोल्यूशन देखा कि ऑनलाइन ऐप यूज करना है नहीं इंडिया में। अब यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। अब कितने व्हाट ओला, सॉरी अपना अमेजोन और फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में सबसे यूनिक चीज क्या है? व्हाट इज यूनिक इन अमेजोन? यूनिक क्या है अमेजोन में? सबसे अलग चीज क्या है अमेजोन में? Amazon is worldwide shopping platform. Okay, next. Amazon Pay। सबसे अलग क्या है Amazon में? Amazon Prime in case of repayment. Okay, delivery fast delivery. Next, cashback. You get all product online mode पे। Okay, good. तो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है? जब भी कोई आइडिया तुम लोग कर रहे हो, हर एक चीज का एक यूनिक चीज क्या है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी आइडिया का एक यूनिक चीज होना चाहिए। कुछ भी यूनिक हो सकता है, जैसे अमेजोन का सेफ में सिक्योर पेमेंट बोला है, या कितने लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट को, या हम कितने लोग यहाँ पे अमेजोन को प्रेफर करते हैं फ्लिपकार्ट से बेटर? हाँ, गुड सर्विस। कितने लोग यहाँ पे अमेजोन प्रेफर करते हैं? सब लोग अमेजोन की फ्लिपकार्ट। अमेजोन बोथ आर बेस्ट सर्विस। ओके, बट अगर चूज करना पड़े एक से दो, ओके गुड। तो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है कि फ्लिपकार्ट बोथ आर गुड। 50% अमेजोन, 50% अमेजोन। क्यों? इसलिए बिकॉज सर्विस अच्छा है। इट्स नॉट अबाउट अ फॉरेन कंपनी, बट आप सर्विस अच्छा है, पेमेंट है, बहुत सारे वैरायटीज है, उनको यूनिक है। अब स्टार्ट होता है यहाँ पे नेक्स्ट चीज आता है अनफेयर अनफेयर एडवांटेज। अनफेयर एडवांटेज मतलब कोई एक चीज तुमसे ले नहीं सकता है, या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है। टाटा का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग चीज क्या है इंडिया में? व्हाई पीपल लोग टाटा को क्यों पसंद करते हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाई डज पीपल लाइक टाटा? या चीतू?
या शीतल, लोग टाटा को क्यों पसंद करते हैं? एक चीज जो लोग टाटा के ऊपर लोग करते हैं, टाटा थिंक थिंक टू ऑल पब्लिक, ओके गुड, ट्रस्ट, और क्या है, व्हाई डज पीपल लाइक ओल्ड कंपनी एंड फेथ, ओके गुड, क्यों और करते हैं? एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंट है कि अनफेयर एडवांटेज, नो अदर बिजनेस ग्रुप इज लाइक टाटा, वेरी गुड। तो टाटा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रस्ट, फेथ, फैसिलिटी प्रोवाइडेड बजे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपनी को। कभी भी तुम लोग आइडिया स्टार्ट कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो अनफेयर एडवांटेज तुमसे एक चीज ले नहीं जा सकते, या तुम्हारा ट्रस्ट है, या तुम्हारा टीम है, तुम्हारा एक्सपीरियंस, एक चीज तुमसे लिया नहीं जाता, वो उसको अनफेयर एडवांटेज बोलते हैं। आइडिया जनरेशन में तीन चीज, ये चार चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब लोग पूछेंगे जब तुम आइडिया स्टार्ट कर रहे हो, तो क्यों स्टार्ट कर रहे हो, क्या सोल्यूशन है, तुम्हारा प्रोडक्ट यूनिक कैसा दूसरी चीजों से, अनफेयर एडवांटेज, ऐसा क्या चीज है लोग तुमसे लोग खरीदेंगे, कुछ तो होगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारा क्यों खरीदेंगे, अनफेयर एडवांटेज आता है। अब आता है कस्टमर सेगमेंट। अभी अमेजोन का कस्टमर सेगमेंट क्या है? अमेजोन का सबसे बड़ा कस्टमर सेगमेंट क्या है? कैन एनीवन टेल मी? अमेजोन का कस्टमर सेगमेंट क्या है? कस्टमर सेगमेंट मतलब तुम्हारा एज ग्रुप, सेक्स, लोकेशन, मेल फीमेल, एक इनकम ग्रुप, स्मार्टफोन यूजर्स, वेरी गुड। शॉपिंग मूव, कस्टमर सेगमेंट मतलब तुम्हारा टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब तुम किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो। नहीं, नेवर, कभी भी ऑल ऑल फोकस का सेगमेंट्स में नहीं होता है। सूरज इज नेवर अबाउट ऑल फोकस, ये गलत होता है। किसके लिए? चलो यहाँ पे मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, सब लोगों को स्लाइड दिख रहा है मेरा? सब लोगों को स्लाइड दिख रहा है, यस और नो? ओके, अभी चलो मैं यू फेसबुक का उठाता हूँ, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल उठाता हूँ गूगल का। गूगल का सबसे बड़ा चीज क्या था? इररिलेवेंट सर्च रिजल्ट था, एग्जिस्टिंग सर्च इंजन, हाउ टू फाइंड व्हाट यू आर सर्चिंग था। प्रॉब्लम, सोल्यूशन क्या किया उन्होंने? टेक्नोलॉजी डेवलप किया जो अलाउड टू डेवलप ठीक से रिसर्च और रेलेवेंट कंटेंट ढूंढना। यूनिक क्या था उनका? फास्ट सर्च, और यूजर्स कैन ट्रूली फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग, मतलब वो लोग कुछ भी ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन। अनफेयर एडवांटेज उनका पेज रैंकिंग। कस्टमर सेगमेंट ऑल वेब यूजर्स, ये है प्रॉब्लम सोल्यूशन। या रेज हैंड, किसने हाथ रेज किया? दे कैन टॉक किया। कोई डाउट से अभी तक सब कुछ समझ रहा है? कोई डाउट है अभी तक? एनी डाउट टिल नाउ? कोई क्वेश्चन या डाउट? समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं तुम लोग को एक वीडियो दिखाता हूँ इसके बाद, पहले फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में जाते हैं। या वैष्णवी, यू हैव एनी डाउट और यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग? कोई डाउट है कि सब समझ गया? ओके 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 ओके। यश, यश शीतल, ओके। तो मैं नेक्स्ट चीज में आता हूँ तुम लोग के, कि कस्टमर सेगमेंट अगेन, ओला का कस्टमर सेगमेंट कौन है? ओला का कस्टमर सेगमेंट कौन है? पैसेंजर्स, अगेन
मैं वापस बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे ऑल वेब यूजर्स था, यूट्यूब का ले लो कस्टमर सेगमेंट, मास मार्केट फॉर यूजर्स, एमेच्योर वीडियो ब्लॉगर्स और एडवर्टाइजर्स। तो एडवर्टाइज करना चाहते हैं या जो ब्लॉगर्स रहते हैं उनका है। तो फॉर एग्जांपल कस्टमर सेगमेंट हमेशा तुम लोग को आइडेंटिफाई करना चाहिए ब्रेकडाउन। जैसे अमेजोन में एक एक ग्रुप रहता है कि जो प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल उनका ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, उनका प्राइस रेंज में एक मिडिल क्लास से एक इनकम ग्रुप है, ठीक है, बुक रीडर्स है। तो हर एक चीज को तुमको डिफाइन करना है। अमेजोन एक बहुत बड़ा मार्केट कंपनी है, टेक कंपनी, तो हमेशा एक प्रोडक्ट्स नहीं रखते, अलग अलग चीज है। तो हर एक का कस्टमर सेगमेंट अलग अलग रहता है, प्राइस रेंज अलग रहता है। रिच रिच कोई भी जिसके पास जो, हाँ, पीपल ऑफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वेरी गुड, बहुत डिफाइन करना होता है अमेजोन का। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने उठाया कि उनको क्लोथ्स खरीदना है या बुक्स खरीदना है, एविड रीडर्स अगर बुक के लिए है तो उनके रीडर्स उनके कस्टमर सेगमेंट है, या जो कॉलेज स्टूडेंट्स जो बुक्स होते हैं उनके लिए, या बैग्स, लैपटॉप में टेक करने हैं, जॉब करने वाले, वेरी गुड, ये सब कस्टमर सेगमेंट। अब आता है चैनल टू कस्टमर्स। अभी मैं वापस एक आइडिया उठाता हूँ। अगर एक एक हमारे पास हमें प्रोडक्ट खोलने का है और एक हॉस्पिटल को ऑनलाइन ऐप खोलना है, कैसे अपना प्रोडक्ट तुम लोग बेचोगे मार्केट? कैन एनीवन टेल मी? कैसे प्रोडक्ट बेचोगे तुम लोग? मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग कैसे कैसे करोगे मार्केट? ऑनलाइन सी चानवर्ड में खोलना है तो अलग तरीका होगा, तो कैसे करोगे? ओके, पोस्टर और टीवी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट की नीड देंगे, वेरी गुड, नीड बताना बाय टेलिंग एडवांटेज, एडवर्टाइजिंग इन सोशल मीडिया, न्यूज। फिर लोकल ग्राम पंचायत का सपोर्ट लोगे तुम लोग, ये सुनो। और कैसे करोगे? बाय गिविंग नॉलेज अबाउट ऐप। और कैसे करोगे? By providing them our product is best. Next, okay, very good. First, understanding the customer availability and very good. We need a product. Very good. तो यहाँ पे चैनल टू कस्टमर्स क्या होता है? पार्ट टू कस्टमर्स, मतलब अपना कस्टमर कैसे वो लेके जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जब गूगल ने लॉन्च किया था तो यूजर रेफरेंस चालू किया था, यूट्यूब ने चालू किया था तो फाउंडर्स फाउंडर्स फ्रेंड्स को किया था, टेक्नोलॉजी मैगजीन में डाला था, ईमेलिंग किया था, रेफरल मार्केटिंग किया था, अमेजोन ने चालू किया था, रीसेलर्स चालू किया था। अब मैं फेसबुक पे अभी नहीं आऊंगा। तो by referring to person by communicating news creative groups, very good, ठीक है। नाउ कम्स द कॉस्ट स्ट्रक्चर। जब भी तुम लोग बिजनेस चालू करते हो, जो अमेजोन ने फ्लिपकार्ट में चालू किया था, तो पहला कॉस्ट उनके दिमाग में क्या आया था? सब इंजीनियर, पहला कॉस्ट उनके दिमाग में क्या आया था? कैन एनीवन टेल मी? पहला कॉस्ट जब अमेजोन फ्लिपकार्ट ने चालू किया तो पहला कॉस्ट क्या आया था? बोलो, कॉस्ट मतलब बिजनेस स्टार्ट करना, क्या कॉस्ट आया था? मार्केटिंग कैसे करें? गुड, मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगा? पहला कॉस्ट। Amazon.com ने जब चालू किया था, फ्लिपकार्ट ने चालू किया था, तो क्या कॉस्ट आया होगा? डोमेन बुक करना, नाम बुक करना, डोमेन बुक करना एंड होस्टिंग लेना। एम आई राइट? डोमेन जब तक नाम बुक नहीं करोगे ऑनलाइन तो स्टार्ट नहीं होगा।
Yes or no? Create website, patent, very good. अब नहीं कर रहे. वेबसाइट कॉस्ट और क्या कॉस्ट होगा? देखो ये आइडिया लीन कैनवास इज आइडिया जनरेट और क्या क्या कॉस्ट होगा? पहला हो गया डोमेन बुक करना, नाम बुक करना, वेबसाइट क्रिएट करना, फिर प्रोवाइड कॉस्ट क्या होगा? टू प्रोवाइड मिडिल क्लास मतलब कस्टमर एक्विजिशन मतलब ठीक है गुड. नेक्स्ट कॉस्ट क्या? कॉस्ट मतलब जब बिजनेस चालू करते हो तो हर एक चीज का एक एक्सपेंस रहता है. तो क्या एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस गुड. फ्री डिलीवरी और क्या रहेगा? ऑफिस स्पेस रहेगा, कॉस्ट ऑफ ऑफिस वेरी गुड. नेक्स्ट रॉ मटेरियल, रॉ ऑफर्स गुड. और Amazon का पहला कॉस्ट है होस्टिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऑपरेशनल कॉस्ट, रेंट, स्टोरेज, फैसिलिटीज, डिलीवरी, पेरोल, ये सब कॉस्ट है. यूट्यूब का होस्टिंग, डेवलपमेंट, पेरोल, सैलरीज. होस्टिंग डेवलपमेंट गूगल का है. तो जब भी कॉस्ट आता है तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लिखना पड़ता है. मार्केटिंग कॉस्ट, एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए क्या क्या कॉस्ट रखते हैं, जैसे लीफलेट्स, पेपर्स, मार्केटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, होस्टिंग, पीपल सैलरीज. तो ये सब कॉस्ट है. जब भी तुम बिजनेस कर रहे हो तो हर एक चीज के कॉस्ट रखने का चाहिए. ठीक है. ये अमेजोन का लीन कैनवस है. जब उन्होंने ऑनलाइन बुक स्टोर खोला था तो उनका प्रॉब्लम क्या था? लैक ऑफ ऑनलाइन बुक्स को, हार्ड टू सेलेक्ट बुक्स ऑनलाइन. सोल्यूशन क्या था? बिल्डिंग एन ऑनलाइन बुक स्टोर. यूनिक वैल्यू बाइंग अ बुक्स और पीसी और होम और ऑफिस विदाउट विजिटिंग अ लोकल यूनिक था. अनफेयर एडवांटेज उनका लोअर प्राइस था. कस्टमर सेगमेंट बुक रीडर्स था. समझ नहीं आ रहा सब लोग को? यस, समझ में आ रहा? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन अगर समझ में आ रहा. कॉस्ट है होस्टिंग, ऑपरेशनल कॉस्ट, पेरोल. ठीक है. ये अमेजोन को समझा. अमेजोन ने जब भी चालू किया था, फ्लिपकार्ट ने भी जब चालू किया था तो बुक से चालू किया था. ये गलत, बुक रीडिंग से चालू किया था. नाउ कम्स द रेवेन्यू स्ट्रीम. ओला उबर का रेवेन्यू क्या है? व्हाट इज ओला का सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्या है? रिमेंबर चीज, कभी भी एक रेवेन्यू मॉडल नहीं रखना चाहिए. ओला का रेवेन्यू मॉडल क्या है? कैन एनीवन टेल मी? ओला का रेवेन्यू मॉडल क्या है? चलो फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू मॉडल क्या है? चलो अमेजोन का रेवेन्यू मॉडल क्या है? अमेजोन का रेवेन्यू मॉडल क्या है? व्हाट इज द रेवेन्यू मॉडल ऑफ अमेजोन? अमेजोन का रेवेन्यू मॉडल क्या है? एक है अमेजोन पे. फिर रेवेन्यू मॉडल मतलब कहाँ से तुम अर्न करते हो, क्या क्या पैसा अर्न करते हो. योर अर्निंग मनी, एक रिसोर्स क्या है तुम्हारा अर्न करने का. रेवेन्यू मॉडल वो होता है. अमेजोन का पहला अमेजोन पे, अमेजोन प्राइम, अमेजोन वेब सर्विसेज. जो लोगों का बुक ई कॉमर्स रहता है, अफिलिएट मार्केटिंग रहता है. अमेजोन का रेवेन्यू मॉडल वो सब है. समझ नहीं आ रहा है? अमेजोन टीवी वही है, अमेजोन फायर स्टिक. और बताओ अमेजोन फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू मॉडल क्या है? अमेजोन एक्को गुड. अलेक्सा गुड. B2C business good. Very good. Next, फ्लिपकार्ट का ई कॉमर्स मॉडल. बट अगेन व्हाट इज ई कॉमर्स का मॉडल? बहुत सारे चीज है. ई कॉमर्स और क्या है?
एक सिंपल एग्जांपल बता दो तुम लोग को। क्या नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू मॉडल क्या है? लोगों ने देखा होगा, तुमने नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू मॉडल क्या है? लेटेस्ट प्रोडक्ट, नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू मॉडल क्या है? अलग अलग पैकेजेस, अलग अलग सब्सक्रिप्शन, am I right? सब्सक्रिप्शन, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। कभी भी किसी का भी एक रेवेन्यू मॉडल नहीं होता, अलग अलग रेवेन्यू मॉडल होता है। जियो का अलग अलग प्लान। तो ये सब अगर जियो के वेबसाइट पे जाओगे तो अलग अलग रेवेन्यू मॉडल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोग को यहाँ पे एक सेकंड, जियो फोन, वेरी गुड। जियो फाइबर, जियो डोंगल, वेरी गुड, वेरी गुड। जियो का प्लान है, फोन है, राउटर है, वेरी गुड। अभी लोगों को समझ, जियो टीवी, वेरी गुड, उनके एप्स, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? सो लीन कैनवस का सबसे बड़ा एक चीज इंपॉर्टेंट, चार पांच चीज हमारा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट प्रॉब्लम इन जियो मार्ट, वेरी गुड। राइट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, राइट सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना, मतलब क्या बिजनेस चालू करना है, कौन सा बिजनेस चालू करना है, हम यूनिक कैसे है, अनफेयर एडवांटेज क्या है। जैसे जियो का अनफेयर एडवांटेज है लोवेस्ट प्राइसिंग, सबके पास अवेलेबिलिटी है। देखो ये प्रोग्राम आइडिया जनरेट कैसे करते हैं। जब भी एंटरप्रेन्योर अपने लिए काम करना चालू करता है तो आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया कैसे जनरेट करना, ठीक है शीतल? तो आइडिया जनरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा था प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अब जियो को ऑनलाइन शॉप, लोग यहाँ पे जियो जियो पेट्रोल, ओके मैं इस पे बाद में आता हूँ। राइट आइडिया चालू कैसे करते हैं, ठीक है? तो पहला चीज है राइट प्रॉब्लम, राइट सोल्यूशन होना चाहिए। यूनिक क्या है? जब भी आइडिया चालू, बिजनेस चालू, जियो ने देखा कि जब जियो ने चालू किया था दो चीजें का, एक अच्छा 4G कनेक्टिविटी नहीं इंडिया में, सेकंड चीज प्राइसिंग का प्रॉब्लम, उन्होंने सोल्यूशन किया, प्राइसिंग प्रॉपर लेके आया। यूनिक क्या है? अलग अलग ऑप्शंस पर जीबी का प्लान लेके आया ना। अनफेयर एडवांटेज उनका सबसे बड़ा चीज क्या है जो उनसे ले नहीं सकते हैं? उन, उनका क्या ले सकते हैं कि उनका कनेक्टिविटी ज्यादा है, उनके जियो सोर्स ज्यादा है, कस्टमर सेगमेंट। उन्होंने अमीर लोग के लिए भी निकाला, बिलिंग भी निकाला, उन्होंने एज ग्रुप के लिए भी निकाला, जो लोग सब सब कस्टमर्स के कम्युनिकेट कैसे किया पहले, टीवी, एफएम, एडवर्टीजमेंट, बिल्डिंग टू बिल्डिंग उन लोग गए। कॉस्ट स्ट्रक्चर उनका, जो उनका जो बैंड्स लेने का है, ऑफिस कॉस्ट, टेक्नोलॉजी कॉस्ट, सैलरीज, रेवेन्यू स्ट्रीम अलग अलग, जो अभी तुमने जियो का बात बोला। तो जब भी तुम लीन कैनवस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, प्रॉब्लम्स, राइट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, सोल्यूशन आइडेंटिफाई करना, यूनिक यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन रखना, अनफेयर एडवांटेज करना, मतलब ये तीन चार तो हम लोग हमेशा तुम लोग को रखना चाहिए। अगर राइट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो मतलब बिजनेस चालू करने का मीनिंग नहीं है। कोई भी लाइफ में कभी भी बिजनेस चालू करना अभी नहीं, हमेशा इंपॉर्टेंट है। यस और नो? जब भी इन्वेस्टर्स देखता है एक चीज, इन्वेस्टर हमेशा एक चीज देखता है, तुम क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या सोल्यूशन देख रहे हैं। अगर तुम राइट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर, प्रॉब्लम क्या जाता है, सब तीन चीज में स्टार्टअप फेल हो जाती है। राइट प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही है, राइट सोल्यूशन नहीं दे पा रही है, और राइट टारगेट कस्टमर, राइट किस कौन से कस्टमर को तुम किसको बेच रहे हो, वो हमेशा गलत हो जाता है।
कस्टमर पहचानना हमेशा गलत हो जाता है, हमेशा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, अर्बन कंपनी ने जब चालू किया था, अर्बन कंपनी मतलब होम टू होम सर्विस है, चलो मैं अर्बन कंपनी ने चालू किया था तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उन्होंने टाउन साइड चालू किया, एक क्लस्टर सेगमेंट में चालू किया था, जो जिससे पैसा लोग घर बैठे सर्विसेज ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी जियो मार्ट ने जब चालू किया, जियो मार्ट ने टीयर 2 3 सिटीज में चालू किया, हर जगह चालू नहीं किया। उन्होंने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई किया जियो मार्ट ने, कि घर हर लोकल किराना शॉप से उन लोग टाई अप करेंगे और जगह बेचेंगे, ठीक है। अब क्यूआर कोड है, कभी सोचा था रेस्टोरेंट का कस्टमर सेगमेंट रहेगा? जो क्यूआर कोड आया है अभी मार्केट में, पेटीएम के लिए रहता था, उसके लिए रहता था, कभी सोचा था क्यूआर कोड जो होते हैं यूज होगा रेस्टोरेंट के लिए? यस और नो? थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ भैया, एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है, थोड़ा सा वो दिखाओ आज हमारे बीच में, ठीक है। एनी डाउट अभी तक जो सीखा है तुम लोग को? एनी डाउट्स? सब लोग को समझा? जितने भी यहाँ पे 78 लोग हैं, सब लोग को समझा? सब यस टाइप करो, यस और नो। नहीं समझा तो मुझे बताओ, मैं तुमको वापस एक्सप्लेन करूंगा। बिकॉज मैं की मैट्रिक्स में अभी इसलिए नहीं आ रहा हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा बहुत अलग है। आइडिया जनरेशन में की मैट्रिक्स अभी जरूरत नहीं होता है, बल्कि इसलिए मैं की मैट्रिक्स में आने वाला अभी तो एक्सप्लेन करूंगा। सब लोग को समझा? ओके। दो मिनट एक वीडियो दिखा रहा हूँ तुम लोग को। सब लोगों को सुनाई दे रहा था वीडियो? नो सर। ओके वेट। अभी सुनाई दे रहा है सब लोग को? कैन एवरीवन हियर द वीडियो? वेट, अभी सुनाई दे रहा है? Entrepreneurial event, there's something wrong with them. I met a lady outside. Okay. अभी सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर। ओके। नो सर, नो साउंड आ गया ना? आपका आवाज आ रहा है, वीडियो का नहीं आ रहा है अभी। I'm guessing everybody's entrepreneurial because if somebody is यस सर, चलो ये अभी। attending an entrepreneurial event, there's something wrong with them. I met a lady outside there.
from Citibank, and she walks up to me and says, you know, sir, I'm from Citibank. मैंने कहा यार Citibank का तो accelerator से होगी या Citibank तो करता नहीं है और all that. There's no sir, we do personal loans and all that. I said, all these guys here need money, but I can guarantee you will not give money to them. They are not their target audience. So I'm assuming that you are all entrepreneurs. That's the kind of the ground rule. Now raise hands whoever has an awesome idea or has had an awesome idea. You know, so keep your hands raised. Look on one side and then look on the other side. 4 or 5 people on this side, 4 or 5 people on that side. I am guaranteeing you that 9 out of these 10 people will not do anything with that idea. That's a fact. It takes, ideas are cheap. Who cares about the idea? Have a couple of pegs, go to a nice, bar. The music is awesome, and you will have so many ideas coming. Next in the morning, when the reality hits you, there's the EMI, and God forbid if you're married, you have kids, there goes your idea, right? Yes. But some of you do that, take that leap of faith and say, I'm going to do something about that idea. So I want those guys here who are doing something about that idea, building a product or service, to raise their hands. So keep them raised, look both sides, and I'm guaranteeing you, the guy next to you or this guy, one of them will not get funded. That's a guarantee. And 5 on this side, 5 on this side, 9 out of 10 will not get funded. And you guys will close down, you will be in debt. After a year, you will go back. Parents, maa-baap gaali denge. If you are married, your wife, your husband, they're going to hate you. And if you have kids, you would have dragged kids through some really tough time. And even if you, and then I heard they said there are some funded ones. Which are the rare funded ones? Are there any funded startups here? 1, 2, 3, 4. Anybody on that side? 5. What, 6? So guarantee in 6 में से 5 बंद हो जाएंगे. The startup world is a very brutal world. The customer outside doesn't care whether the product that he's getting is from Airtel, which is a big behemoth who can spend millions of dollars on advertising, or from this new startup which is doing something which is fighting with Airtel. Just an example. The customer doesn't care. When they give you their money, they say, am I getting value? Is it helpful for me? Is it helping me save money or make money or do what? Right? They don't care whether you are just out of college. So nobody is going to say, oh, you're just out of college. I'm going to treat you very nicely. And I'm going to give you money even if I don't need it. It doesn't happen that way. And if, God forbid, you are doing a startup, and I think those are kind of slowly becoming rare breeds, but if there are some of those kind of animals there who are doing for the so-called downloads and eyeballs and all that stuff and not making money. And if you don't take money, nobody is going to fund you. But if some, what's the word for maybe somebody dash investor has put in money, then he's going to lose his money, right? So I think that was what was wrong with the Indian whole startup ecosystem in the last 2 years. It got so glamorized. People got out of colleges. They said, "यार नौकरी छोड़ो, हमें CEO तो कोई रखेगा नहीं, मैनेजर भी नहीं रखेगा. एक डोमेन रजिस्टर कराओ, 99 रुपीस में हो जाता है GoDaddy पे, है ना? एक लोगो बनवा लो, फाइवर पे $5 में बन जाता है, और CEO लिखूंगा अपने कार्ड के ऊपर, फाउंडर CEO. हो गया स्टार्टअप शुरू. Go into the events. Now there are so many co-working spaces. Every Friday they do events, free ki beer, free ka khana, chalo. I don't know this. I'm sure you guys have seen that beer to beer hai, and you've seen that, right? So that's a reality, guys. If somebody is in it for the ride, for the, for saying, oh, this is so exciting and all that, please get out now before you drag yourself, your family, your near and dear ones through this thing. It's very hard. It's very tough. It's not forgiving. You will be hit by depressions. There will be cycles and stuff like that. But if you think that is the ride you want, then this is the right place to be, right? And I hope to see some good
pitches now and see. Hopefully, there will be some startups that are worth investing and maybe will still be around in like 2 to 3 years. Thank you. सब लोगों को समझा वीडियो? एवरीवन लाइक द वीडियो? यस और नो? तो Rage coffee है मेरे पास. Rage coffee. Rage coffee. Rage coffee. Obsessing over rage coffee. Rage coffee is something. yeah. So now we have with us. Let me check. Praful. Yeah. So now we have with us Praful, as I have already introduced him. Thank you, Praful, for joining us in a very short time, and thank you करने के लिए बहुत जल्द, मतलब बहुत आपको 3-4 घंटे पहले आपको मैसेज किया था, मैंने आपका स्टोरी हर घर तक पहुंचना चाहिए और हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं. तो प्रफुल के बारे में मैं ज़्यादा, मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैं कुछ ज़्यादा होता नहीं है प्रफुल का इंट्रोडक्शन देने के लिए. तो प्रफुल, ओवर टू यू एंड होप यू ऑल लाइक दिस. थैंक यू. थैंक यू गौरव भैया. एंड आप बोलोगे और मैं नहीं आऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज यू हैव बीन an inspiration for me personally and for the whole ecosystem of startup in India. So जब से मेरी उम्र तो बड़ी छोटी है, मैं बच्चा हूँ, आप भी बच्चे ही हैं, आप एंटरप्रेन्योर में बच्चे होंगे, मैं किसी को वो नहीं बोल रहा हूँ एज के बारे में, बट टू बी ऑनेस्ट जब से मैं 5-6 साल 8 साल जब से मैं स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड सीख रहा था, तब से गौरव भैया का मैंने देखा है, उनको नोटिस किया है कि उनके बहुत सारे शब्द जो है भाई ये हाँ, तो मैंने जब से समझा एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया को, स्टार्टअप की दुनिया को, तो गौरव भैया हमेशा से वहां रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. सो आई डोंट नो मच कंटेक्स्ट अबाउट द इवेंट की क्या है इवेंट और किस बारे में है, बट जहां तक गौरव भैया से मेरा बात हुआ था, जहां तक आई गॉट टू नो अबाउट द कि आई शुड शेयर माय स्टोरी. अपार्ट फ्रॉम दिस आई शुड गिव सम नटशेल और समथिंग एज अ नगेट्स टू हाउ कैन एंटरप्रेन्योर्स गेट एम्पावर्ड, उनको कैसे एम्पावरमेंट हो सकता है, कैसे उनकी ग्रोथ हो सकती है, कैसे उनको पता चले कि क्या गलतियां हमने की है. So being a very first generation entrepreneur from my family, it is very difficult to start a startup in India. But majorly बहुत ज्यादा मेरा बचपन से मेरा दोस्ती, मेरा फ्रेंडशिप जो था, मेरा जिसके साथ उठना बैठना था, वो मेरे उम्र के लोग नहीं थे. जब से मैं समझदार हुआ था, मैं 10th 11th 12th में भी अपने सीनियरों के साथ बैठता था. जब मैं 10th में था तो मैं 12th के सीनियरों के साथ बैठता था. एंड आई यूज्ड टू टॉक अबाउट 12th में क्या करते हैं, उस 12th वाले जो सीनियर होते हैं वो क्या करते हैं. जब मैं 11th में गया तो मैं 12th वालों से बात करता था. जब मैं 12th में गया तो फिर मैं और दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स और इनसे बात करता था. सो मुझे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और अपने जो साथ वाले लोग थे, अपनी क्लास वाले, अपनी एज के ग्रुप के, उनसे मैं हमेशा 3-4 कदम 2 कदम आगे रहता था. नॉलेज हो गया, आपके शॉर्टेड होने में, मतलब यू नीड टू बी शॉर्टेड. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मतलब आपको शॉर्टेड होना पड़ता था. चीजों की क्लैरिटी, क्वेश्चंस क्या होंगे नए पुराने, उनके आंसर्स, फिर क्या हर्डल्स आ सकती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं इन पर्सनल लाइफ, इन रिलेशनशिप, इन विच एवर वे पॉसिबल, तो वहां से आंसर्स अच्छे मिलते थे. तो एक मेरा फर्स्ट लर्निंग था. देन आफ्टर आई वेंट फॉर अ बैचलर्स. सो जब वहां भी था मैं, तो मेरे सीनियर से मेरी दोस्ती थी, तो वहां से क्लैरिटी है कि व्हाट डज इट मीन टू गेट अ डिग्री इन इंडिया, व्हाट डज इट मीन टू गो फॉर एन मास्टर एंड एवरीथिंग. So वहां से आइडिया और I started preparing for CAT and GMAT to get into the top business school of India and abroad. So I tried very hard. I did my level best, and 2.5 years of sweat and blood, everything into that CAT, GMAT, LRDI questions, comprehensions and everything. The world politics, the geopolitics, the whole general awareness, whatever happens under and above the sun, you need to know and you need to put it down on the question, on that exam day to get the answers, to get the that examinations cleared, ताकि आप आगे फर्दर जा सको एमबीए करने के लिए. क्योंकि मास्टर डिग्री इंडिया में ऐसी डिग्री होती है जो अगर आपको वाकई में करना हो तो आप अच्छे कॉलेज से करना चाहोगे, क्योंकि वो आपका लास्ट होता है एंट्री, एग्जिट बैरियर, एंट्री बैरियर जो बोलो, लाइफ का एंट्री बैरियर होता है और एजुकेशन का एग्जिट बैरियर होता है. एज एन एजुकेशनल अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, एज अ फॉर्मल एजुकेशन की बात करूं, सो वही किया, नहीं हो पाया. 2.5 साल मैंने बहुत कोशिश की, अपने मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाए. सो जैसा मैंने कहा कि उस टाइम पे मैं लिंक्डइन एंड कोरा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो आई एम में ऑलरेडी थे, जो आईआईटीज में पढ़ते थे बच्चे, उनसे पूछता था कि आई एम में ऐसा तो क्या एमबीए पढ़ाते हो भाई, हार्वर्ड में ऐसा क्या एमबीए पढ़ाता था. मतलब कंपैरेटिवली आई यूज्ड टू गेट टू नो कि यूएस की उस इंस्टीट्यूशंस में कैसा एमबीए होता था. तो वहां से भी पता चलता था कि लाइफ इज नॉट लाइक द वे इट इज, जैसा दिखता है सोशल मीडिया पे, जैसा हम लोग बताते हैं, जैसा पेरेंट्स बोस्टिंग करते हैं अपने बच्चों के बारे में कि मेरा बेटा वहां पढ़ रहा है, आईआईटी में पढ़ रहा है, एम में पढ़ रहा है. तो वहां से चीजें समझ में आई कि ये माई की लाइफ है ये.
तो thought of clarity आ गया, admission नहीं आया तो मैंने decide किया कि I will not be getting into the private colleges to get, you know, to get my degree of 2 years of MBA, 2 years of big 700 plus 700 750 725 दिन के आसपास का investment with 12-15 लाख का investment, then the whole picture ये वो, फिर मैंने कहा return on investment is not good, you will be paying EMIs throughout your life. Then I dropped down an idea, then I started exploring whole India. I travel India with a very, very, very less amount in my pocket. It taught me a lot. I met so many people. I traveled across. I tried so, you know, amazing food, different people, different, you know, their characteristics, their likes, their dislikes, and everything. I got to know so many points and so many numbers was juggling in my mind, and I was doing a parameter. I was doing like something juggling in my mind. What should I do? What next? Then traveling ended. Then I just the way parents India में होता है ना कि they just forced me to what next? What are you going to do? Then I told them I'm going for an MBA. I lied to them and tell कि मैं MBA करूँगा. नहीं किया मैंने MBA. Then I started working at McDonald's as a waiter. वहाँ पे waiter भी नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जो सर्विंग करता है उसको, वो मैं वहाँ से स्टार्ट किया और हम लोग मैं प्लेट्स भी उठाता था और ये मैंने 5 महीने किया. So वहाँ से चालू करके I got to know how does McDonald's work, how does the ecosystem mechanism of this food chain work, which is largest in the world. So I learned so many things from there. I learned communication, I learned hard working, I learned everything all. I used to see so many people there as well. So shuru se, from very early days of my life, since I understood the life, I understood the meaning of being what you are. So मुझे लोगों में इंटरेस्ट था, लोगों की कहानियों में इंटरेस्ट था, लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनका ड्रेस कोड क्या होता है, तो कैसे बात करते हैं, वो किस फैमिली से आते हैं, उनके मामा बुआ मासी क्या करते हैं. So it taught me a lot. So I have never been a studious student in my life. I have always been a curious student. What next? How? When? Where? ऐसा. So McDonald's में भी बहुत सीखा. Then I thought of I should go for something मतलब of my own. I should start a food chain. I should start something. So वहीं पे एक आइडिया आया चाय का कि चाय इज द ओनली थिंग इन इंडिया जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पानी के बाद पी जाती है, और एक अलौती ऐसा चाय प्रोडक्ट है जो फूड एंड बेवरेजेस का प्रोडक्ट है जो पूरे इंडिया में यूनानिमसली पिया जाता है और पाया जाता है. बाकी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है पानी और चाय के अलावा. जो आप बोलते हैं ना कि पल पल पे भाषा बदले कोश कोश पे पानी, तो ऐसा हिंदुस्तान है. अब तो पल पल पे भाषा बदल जाती है, कोश कोश पे पानी बदल जाता, तो खाना तो बदलेगा ही बदलेगा. तो आई चोज चाय एज अ प्रोडक्ट एंड देयर वाज नो एंट्री बैरियर भी नहीं था. So कुछ था ही नहीं, आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, you do not need certifications, you do not need expertise, you just go. I just went and I thought कि I should start something of very small because I was just 20th at that time. So dream big, start small. Like now you must have come across this quote of mine from various platforms. So I thought of something very big but started very small just to gain the confidence in myself, just to gain the financial. जो क्या होता है जब when you are young you should be working hard with your time and energy rather than money. You shouldn't play with your money in your early days of your life, right? Once you grow with 25-30 years, you should play with money rather than time and energy. So that was the point. And I thought of a chai ka thela, and it took me 55 days to start a chai ka thela on roadside. But the moment, the day I thought of a chai ka thela, to start a chai ka thela, I'm drinking chai out now as well. So the moment I thought of a chai stall, I went to the nearby shop to purchase the initial stuff of my like gas chula, chai patti, chhanni and everything. That items used to be be with me all along at my bed. So they forced me to purchase the rest of the item to get the place done and let's go for it. So but it took me 55 days to start a chai ka thela. See, आपको चाय का ठेला डालने में इंडिया में 50 डेज लग गया. सोचो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एवरीवन टू बी एन एंटरप्रेन्योर, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि हमारे एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं आते. तो वहां से चालू किया एंड आई स्टार्टेड चाय का ठेला ऑन रोड साइड. आई डिड एवरीथिंग बाय माय ओन बिकॉज़ आई वांटेड टू लिव दैट जर्नी, आई वांटेड टू स्ट्रगल. बिकॉज़ हम लोग स्ट्रगल स्टोरियां पढ़ते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है कि गौरव भैया ने ऐसे किया वो किया, पर नोबडी वांट्स टू लिव द लाइफ ऑफ गौरव भाई. नोबडी लिव्स. कोई प्रफुल्ल की जर्नी बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, पर कितने लोग संघर्ष करने के लिए रेडी है, कौन उस टनल में जाना चाहता है. क्योंकि there is quote which is very famous and which is very inculcated in my every single heart and soul, that the only way to get out is through. You cannot escape the reality, and once you get into that tunnel there is a light ahead, maybe 1 kilometer 2 kilometers ahead. So that's how it started. Now we are doing well. I ran it very successfully for 2.5 years.
I made chai by my own. I used to, wash utensil, sweeping, and everything I used to do by myself for 2.5 years. I did make huge money because there were no rents on roadside. There were no electricity and tax, and nothing was there. I was just making money, minting money. Was making good amount of money. So that's how it started. And whatever I learned throughout my journey of CAT, GMAT, whatever I learned, my English and everything was there. I used to speak with people and they were, oh yeah, there is an English speaking chai wala in Ahmedabad, which is like in eyes on the cake. I used to make good chai, and if you get the good talks, if you get the good insights, informations, career counseling, and so many things on roadside, you don't need anything else, right? So that's what the things. Then COVID happened. So many things were there. I used to do a lot of stuff in my marketing part. Then Valentine's Day free chat to singles went international viral. That event made me very, very famous in 2018. Those are 18 mein. Then the ritual was there. Ritual is still happening, and we are giving free chai again on this 14th February. So many sales were there. Ahmedabad Ludo Championship, cycle program, and so what I do believe, connecting the dots were there. So now today we have 50 plus outlets, and we are touching 200 plus outlets by the end of this year. I run one more company, which is not a company, which is my heart, which is my inspiration, which is my love, which is called MBA Chaiwala Academy. So throughout the journey of MBA Chaiwala, I've met so many people, millions of people I've met personally. To be honest, I have got to know their story, their struggles, their families, their sacrifices, their their issues, why they are not able to be doing what they should do, what their dreams, why they are not be able to follow dreams, and everything, whatever there. So I wanted to teach them. I want to empower India. We are creating an ecosystem where we can create entrepreneurs and we can make entrepreneurs. And it's not like that we can make entrepreneurs like unicorn or billionaires, millionaires. We are not into that. So personally, I do believe that we are touching small entrepreneurs from India, from Bharat, from Hindustan, not India. So barber, chai wala, saloon, and sabji wala, maybe kapda wala, maybe purse, maybe a auto rickshaw wala, maybe they need chota changes. They need a little changes, upgradation in their personal life. If they do it, if someone is making 10,000 a day on being a running a saloon, they can make it 20,000 a day by some small changes being made at their outlet or their shop. So that's what we are doing right now. And in this whole journey, people, my relatives, my friends used to laugh a lot at me and my decision being an MBA Chaiwala, but today they are very proud. So that's how it goes. Where entrepreneurs are mean to be misunderstood for a long time, because whatever is going in and out in your mind, nobody can understand. You sleep, you eat, you bath, you are in toilet, you just have ideas which is keep juggling in your minds, and you try to create something which can boom, which can boost yourself, your company, your team, and the whole ecosystem of entrepreneurship in India. So that's how the journey so far. We are doing well. We are creating good amount of new entrepreneurs on board. So that's how things are, guys. Any question if you have, I can, I'm always there for an answer, to be honest. Thank you. Thank you, Praful ji. So, and any questions? कोई questions है तुम्हारे पास? तुम लोगों के पास? They can type also in the comment section. So Praful, I have one question to you. At a very young age, देखो मैं इतना तो कुछ हूँ नहीं, तो मैं तुम्हारा आर्टिकल पढ़ रहा था. 22 लोकेशन, मतलब कैसे चालू किया? एक से एक लोकेशन को, एक तुम जानते हो तुम्हारा आपका कंपटीशन चाय हाउस भी है, आपका कंपटीशन चाय पॉइंट भी है, आपका ऐसे कैसे अपने मैनेज कैसे किया 22 लोकेशंस को चालू करना? So that article was quite late. Now we have 50 plus outlets. Okay. So in India, when we are opening rapidly, every we are opening 10 plus outlet, 10, 15, 20 outlets we are opening. So we don't have a competition, to be honest. Chai house, chai points, they are the CCD, they are the Starbucks of chai. So our selling point is in Bharat. Like we sell chai price with the 20-25 rupees, right? And India is a very big market, 150 crore people. And they drink chai like hell every day, every time, every occasion, whatever happens, chai will always be there. So there is no perfect competition or direct competition in the market.
So what we are doing, there is a market, there is which we are doing nothing else. We don't see them as a competitor. But what I do believe, once you grow, once you have a structure, once you have a framework, once you have a supply management, these numbers are just numbers. You can multiply exponentially growth, nothing else. Okay, thank you. So Suraj का question है, how did you scan the environment before generating an idea for the startup? So sometimes what happens कि एक कहावत है मेरी बड़ी फेमस है कि जिससे मोहब्बत करते हो उसे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उसी से मोहब्बत चालू कर दो, दूसरा ऑप्शन भी बुरा नहीं है. So you do not need to scan things, you do not need to analyze much, you do not need to study much, but once you decide anything, whatever, the chai was never into my mind कि चाय आ जाएगी. वो आ गई. मैकडॉनल्ड्स में काम करते करते चाय वाज एंट्री बैरियर नहीं था, पैसा कम लग रहा था, 8,000 रुपए में धंधा चालू हो गया. तो उस टाइम की सिचुएशन क्या है भाई, आज एंटरप्रेन्योर आपको बनना है तो आप कोई परफेक्शन थोड़ी है कि आपके पास ये भी है, टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है, पापा का पैसा है, कोई इन्वेस्टर बैठा है, एकदम से सारी चीजें नहीं होती. तो उस सिचुएशन में उस समस्या के टाइम पे, व्हेन यू आर नॉट इन योर गुड टाइम, whatever comes in your mind becomes your $1 billion idea. That's how the chai came. And once you decide that chai will be there, then chai is everything for you. Chai is Facebook for me, chai is my Google, chai is my technology, chai is my Twitter. So you shouldn't underestimate your single idea, which could be anything. Okay. एक क्वेश्चन है जनरल से, आपका एज अभी क्या है? I'm 25 right now. हाँ? 25. 25. Okay. So there is one question, common question दोनों का. For your business, your family supported you? No, they cannot digest, to be honest. They wanted me to doing an MBA and doing an MNC job, because my all rishtedar and everyone was into sarkari naukri or somewhere else. So that was a proud moment for them. But after a good amount of time, they got convinced and they were happy. So ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने चिल्लाया धमकाया, वो I had a good points to make them convinced and they were convinced, to be honest. So if you really a good guy, if you really trust on yourself, your parents will trust you. And if they don't, you shouldn't care about them. Okay. So any questions? Last anyone? So any questions? Yeah, Gaurav sir, I do have a question. Yeah. Yeah. Praful sir. Yes. Yeah. My question is, what was your value proposition? Like the business कोई भी अपन कैसी तरह कर भी ले, but so many chai walas are there. So how did you stand out? Maybe on the first point you have started a chai gada. Okay, that was the requirement of the time. कि वहाँ पे भाई जो income मिल रहा है, कम इसमें हो रहा है. You told your story about that. But then how did you stand out so that you made so many franchise outlets? What different did you? So Pradyuman, today we have a great team. We have a great designing team. Structure is there, operation is there, supply management is there. I will not be talking about today. I will be talking about the early days of my life. So I told you, I used to speak English. Can you imagine a chai wala speaking English in India? Apart from this, I used to talk a lot about career counseling, internet economy, digital creator economy. Being a chai wala, I used to give a lot of gyan and lot of stuff in and around chai. And that was positive. That was positive for an individual. That was positive for the society. And that was positive for the country itself. So kya hota hai? What happens when you drink chai on roadside? You talk about politics, you talk about families, you talk about something which is not at all necessary. Apart from this, I used to do lots of events on my chai ka thela. I did almost 150 events at my chai ka thela. Cycle yatra, Ahmedabad Ludo Championship, free chai to singles on Valentine's Day. Then I did campaign for Kerala floods, which happened in 2018. I gathered around 2.5 lakh rupees from the great people and businessmen of India, of Ahmedabad majorly. Then career counseling was there, book exchange program was there, music night was there, Mehfili Kavita was there. So when you are young in your startup, when you're doing a startup with your early days, early months, you should do. If someone is paying 100 rupees, you should deliver an amount of 10,000 deliverables. Your deliverable should be 10,000 rupees. That was the thing. So people used to come not just for chai. They used to come for network. They used to come for a gyan. They used to come for a knowledge, networking. For something, they used to get a lot of ideas. The way I'm talking right now, I used to talk the same way at the chai ka thela.
because I had nothing to offer, because I didn't have a silver spoon. I just had one thing, and that was my energy, my knowledge, my communication, and I put that into that chai, and that chai became so popular today. So it is a journey of last 5 years. It's not a one-day journey or a 2 months journey. It is a journey of 5 years, and you do not need to convince anyone else when you are starting a business. You just need to be 100%, genuine, transparent, and you ईमानदार, बिल्कुल बेईमानी नहीं, खुद से बिल्कुल नियत साफ. अगर आपकी, if you are selling someone a chai, whether you are selling software, whether technology, नियत साफ है, ईमानदार हो, खुद के साथ बेईमानी नहीं कर रहे हो, तो लंबी रेस की घोड़े बन पाओगे, नहीं तो फिर वही बरसाती मंडे की तरह खत्म हो जाओ. That's it. Okay. I will be taking one or two questions more. I have another meeting at 5:30. Sorry. Okay. Okay. So, this one question. So, who is your idol entrepreneur? Mine? Who is your idol entrepreneur? So my ideal entrepreneur is Jeff Bezos. The year which I born in 1996, he got delivered the books online. See how big and how far they are from us. So he is my ideal. He is my everyone. Okay. So thank you, Praful, and thank you everyone for joining us. Thank you, Prafulji, for joining in a very very. So more questions will be mailed to. There'll be a separate session with Prafulji next time. So there are so many questions, maybe common from them, which is available on Yeah. YouTube. I have started a YouTube channel. They can see there as well, on Instagram Reels as well. I have put out so many questions, common questions from the youngsters on internet. So you should go Google it about it, and that's it from my side. Yeah, thank you. just a last statement, Praful, Yes. sir. Just a last statement. We are organizing ideation challenge in our institute, and we have around 8 to 9,000 students. And this is one of the part of it. Gaurav sir will tell you or rest of the details. So this is one of the part of it, idea generation workshop, and where we were really wonderful to talk to you and hear you. So on this platform, I would like to invite you whenever in the offline mode, whenever you would like, we have time, and I will request you to visit our institute also with the Gaurav sir, right? Yeah. Please convey Thank this you. message Thank through you. mail or through Gaurav bhai's WhatsApp number. I would love to be part of that. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, Gaurav sir. Thank you everyone for having me. Thank you. Bye. Thank you. Take care. Thank you. Pradyuman sir, over to you. Yeah. So dear students, I am really thankful to Gaurav Mishra sir for sharing his valuable time and explaining you this idea generation. Okay. So I hope today you all are very much clear about how to find out the problem and what to do with that problem. Just not finding the problem, but after you find the problem, you have to find the solution. You have to check its cost. You have to check its how the revenue model will be there, and all the different things about it. Okay, so I would request you all to put your ideas into this lean canvas and register yourself for the event. Wait for a minute. I have already shared attendance link and registration link in this chat also. And later on also you can contact me through your teachers. Your mentors are also there in your institute, program coordinators. So those staff will also help you to do the registrations for the event. Okay, do it as soon as possible. Start by today itself. Last date is 8th February, but don't wait for the last date. The day is here. So you have idea, you register for yourself. Okay, thank you. Have a good day. Thank you, Gaurav sir. Thank you, sir. Yeah. Yes, dear students, any doubt for me? Do you want to ask anything to me? Okay, no, I think so. Thank you. Have a good day.